I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. This is a new series wherein we'll analyze previous year economics questions via quiz. Before starting the quiz, a small announcement. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu analysis, important international organizations, daily MCQ series, strategy related to UPSC, CSE, and much more. You can also join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, for class updates and notes. Also, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code SharmaYT10 to get 10% off. Now, let's begin with the quiz. So, the question number one goes as consider the following statements. The Food Safety and Standards Act 2006 replaced the Prevention of Food Adulteration Act 1954. The Food Safety Standards Act 2006 ने Prevention of Food Adulteration Act 1954 को रिप्लेस किया था. ठीक है. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry of Health and Family Welfare. तो जो FSSAI है, it is under the charge Director General जो Health Services के हैं यूनियन मिनिस्ट्री में, वो फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के. तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ऊपर दोनों करेक्ट है, कोई एक करेक्ट है, या दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है? What is the answer, guys? Comment down your answers. So the answer is that the only first statement is correct, which is option A. So the this information was given on FSSAI's About Us page. After the formation of the FSS Act 2006, number of acts and orders that no longer served any purpose were cancelled. तो मतलब काफ़ी सारे एक्ट्स थे जो जब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में आया तो इसमें काफ़ी सारे एक्ट्स को रिप्लेस किया, काफ़ी सारे एक्ट्स को कैंसिल करा. द एडिबल ऑयल्स पैकेजिंग एंड रेगुलेशन ऑर्डर 1998, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर FPO 1955, Meat Food Products Order MFPO, Prevention of Food Adulteration Act 1954, etc. तो इनमें से काफ़ी एक्ट्स को किया गया था कैंसिल. उसमें से एक ये भी था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. तो आपका स्टेटमेंट 1 राइट है. While FSSAI acts under the administrative control of health ministry, FSSAI has an independent chairperson enjoying rank of the secretary to government of India. तो आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत है. ऑल्दो ये उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, बट उसका चेयरपर्सन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट. सो आपका आंसर होगा A, 1 only. Moving on to the next question. Which one of the following is the purpose of Uday, a scheme of government providing technical and financial assistance to startup entrepreneurs in the field of renewable sources of energy, providing electricity to every household in the country by 2018, replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind and tidal power plants over a period of time, providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. तो ये चारों ऑलमोस्ट ऑप्शन मिलते जुलते ही दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा एलिमिनेट करना मुश्किल होगा, पर अगर आपने स्कीम के बारे में पढ़ा हुआ होगा तो मुश्किल नहीं होगा. टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ की फील्ड में है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हर एक घर में बाय 2018. कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं उन्हें रिप्लेस किया जाए नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, विंड और टाइडल पावर प्लांट्स से. और या फिर प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए और उन्हें रिवाइव किया जाए. व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, गाइस? सो द आंसर इज option D, which is providing for financial turnaround and revival of power distribution company. Government of India launched the Ujjwal Discom Assurance Yojana Uday in November 2015. तो उज्जवल डिस्कॉम जो है, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बस यहीं पे आपका हिंट था कि उदय की जो फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उसमें डिस्कॉम इज
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और यहीं आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो आपका ऑप्शन डी था, दैट वाज द करेक्ट आंसर. इट वाज डिजाइन्ड टू टर्न अराउंड द precarious financial position of state power distribution companies. Discoms are responsible for buying electricity from generation companies and selling them to the consumers. कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं यही इलेक्ट्रिसिटी खरीदती हैं उन कंपनीज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और बाद में उन्हें consumers को sell करती है. The discom losses which had progressively reduced in the first couple of years since the inception of उदय, जब से उदय आया था उसके बाद से काफी years तक, like 2 to 3 years तक काफी अच्छा profit हुआ था. Losses recover हो गए थे, कम हुए थे. Have rebounded in 2019 to nearly double the losses recorded the previous year. वो वापस से actually उदय 1.0 जो है ये फेल हो गया था क्योंकि इसने वापस 2019 तक आते आते लॉसेस जितने थे नहीं उससे ज्यादा दुगने कर दिए थे. तो नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग उदय 2.0 विच विल एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मीटर रीडिंग, बिलिंग, कलेक्शंस एंड लीकेजेस और थेफ्ट. इसमें था कि ई मीटर हो, ऑटोमेटिक प्रीपेड मीटर हो कि अगर इतना आपने फीस नहीं पे कर रखा, अपनी बिजली बिल नहीं भर रखा तो वो खुद ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा आर पार्ट्स ऑफ उदय 2.0. Apart, according to Prapti, payment rectification and analysis and power procurement for bringing transparency in invoicing of generators portal, the Discom's total outstanding dues to power Gencos is generating companies, rose to 48% to rupees 81,010 crores in October 2019. कि मतलब 48% से ज़्यादा जो outstanding dues है वो बढ़ चुके हैं, which is 81 crores and 10 lakhs in October 2019. So, moving on to question 3. With reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statements. Fasal Bima Yojana के बारे में बात की गई है. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. Or this scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. तो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं फसल योजना के बारे में. उसमें पहली आपका है कि इस स्कीम पे फार्मर्स जो है वो एक यूनिफॉर्म प्रीमियम देते हैं 2% का, चाहे वो कोई सा भी क्रॉप कल्टीवेट करें किसी भी सीजन में. और दूसरा है उनके पास कि वो जो पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद जो आपकी लॉसेस होते हैं साइक्लोन्स या बिना मौसम बरसात के, तो वो कवर करता है ये. तो आप बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? दोनों में से कोई भी नहीं, या दोनों में से कोई एक, और कोई एक तो वो कौन सा? So the correct answer is option B, which is 2 only. So the second statement is correct. Statement 1, farmers premium has been kept at a maximum of 2% for food grains and oil seeds and up to 5% for horticulture and cotton crops. तो सबके लिए 2% नहीं है, हॉर्टिकल्चर और कॉटन क्रॉप्स के लिए 5% है. तो ये डिफरेंट है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के गलत हो जाने के बाद एलिमिनेट कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास बी ही बचता है, विच इज 2 ओनली. बट स्टिल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवरेज इन अवेलेबल only up to maximum period of 2 weeks from harvesting for those crops which are allowed to dry and cut spread condition in the field after harvesting against specific perils of cyclonic rains and unseasonable rains. तो अनसीजनल रेन, साइक्लोन और साइक्लोनिक रेन्स, इनकी वजह से अगर कुछ भी हमारी फसल बर्बाद हो गई है तो हार्वेस्ट के 2 हफ्ते बाद तक ही आपका ये हम कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो फसल का बीमा हो रहा है, साफ सुथरी बात है. तो ऑप्शन 2 काफी ज्यादा फीजिबल था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइज जो होंगे उसको कवर करेगा. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which of the following currencies has been proposed to be added to the basket of IMF's SDR? तो IMF के SDR में कौन सी करेंसी को इनमें से ऐड किया गया है? रबल, रैंड, इंडियन रुपी, रेनमिनबी. What is the correct answer, guys? This is a straightforward question कि अगर हिंदू पढ़ा है तो हो जाएगा. इकोनॉमिक टाइम्स में था आया हुआ ये इसका एक पार्ट. So, what would be the correct answer? So, the correct answer would be option 4, which is renminbi, which is Chinese yuan.
The SDR is an international reserve created by the IMF in 1969 to supplement its member countries' official reserves. कि मतलब उसके member countries के official reserves को supplement कर सके, इसके लिए SDR आया, IMF के द्वारा बनाया गया था, which is International Reserve Asset. So the IMF's executive board agreed to change the SDR's basket currency composition in November 2015, and the decision now enters into force after a period of transition. In most recently conducted review, which is not recent anymore, the executive board of IMF decided that effective October 1, 2016, the Chinese renminbi will be included in the SDR basket as a fifth currency. तो ये पांचवी करेंसी है जो इस बास्केट में ऐड हुई है, along with US डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग. सो नाउ कितनों का आंसर सही हुआ प्लीज कमेंट करके बताएं. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The term intended nationally determined contributions is sometimes seen in the news is in the context of. तो intended nationally determined contributions के बारे में सवाल है कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है. Pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from war affected Middle East. Plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. Capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Bank. क्या कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करे मेंबर कंट्रीज AIIB के एस्टैब्लिशमेंट के लिए उसके बारे में है ये. प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. क्या ये प्लान ऑफ एक्शन जो है वर्ल्ड सारे वर्ल्ड का है SDGs के बारे में. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इन चारों में से किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है. इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. So the correct answer is option B, which is plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change. Further इसके बारे में और थोड़ा पता कर लेते हैं. अरे पता करो. What are the committees of India under the Paris deal? In the Paris agreement, India committed to achieve the following three targets. INDC. INDC is आपका intended nationally determined contributions. तो इन्होंने पेरिस अग्रीमेंट में इंडिया ने काफ़ी चीज़ें कही थी. इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35% बाय 2030. 40% ऑफ इंडियाज पावर कैपेसिटी वुड बी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स. कि मतलब आप अपने पावर कैपेसिटीज को चेंज करेंगे टू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से. इंडिया विल क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030. तो इतना ज़्यादा आप 20 फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ाएंगे 2030 तक कि उसका कार्बन सिंक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन्स तक का बढ़ जाएगा. नाउ an intended nationally determined contribution is a public pledge from a country on how it plans to play its part in post 2020 collective action on climate change. तो देखिए यहाँ पे बात कर रही है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. तो हर एक नेशन जो है अपना क्या कंट्रीब्यूशन प्लान कर रहा है क्लाइमेट चेंज में कि वो कैसे हेल्प करेंगे. दीज कंट्रीब्यूशंस आर टू बी अचीव्ड बिफोर 2030. Now this is a basic newspaper cutting जिसमें कि इस agreement के बारे में. On to the next question. Consider the following statements. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. The Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. क्या कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2030 से आपको अचीव करना है तक सारे आपको अचीव करने हैं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा बताया गया था. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. So the correct answer is option B, which is 2 only. So only the second statement is correct. The first one does feel like it is correct, but it is not. They are just playing with words. The first report of the Club of Rome was famous limits to growth thesis brought out in 1972. So Club of
ग्रोथ ने द लिमिट्स टू द क्लब ऑफ रोम ने द लिमिट्स टू ग्रोथ करके एक थीसिस पब्लिश की थी 1972 में. While the report did talk about the need of reducing our consumption habits and sustainable development, it is hard to conclude that SDGs were first proposed by them. This is because SDGs are a comprehensive set of goals that include not only environmental conservation but also reducing poverty, ensuring education, curbing malnutrition, etc. So we believe that first should be wrong. और अगर इनके इतिहास में जाएं तो 1972 में गवर्नमेंट स्टॉकहोम स्वीडन में मिली थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के लिए ह्यूमन एनवायरनमेंट पे. तब इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी. तो इट इज जस्ट प्लेइंग विथ वर्ड्स कि 1972 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार दिया था. नो, दैट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट 2, that is the sustainable development goals have to be achieved by 2030. That is true because it is officially known as transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development. Cool. So now moving on to the next question. With reference to the agreement at the UNFCCC meetings Paris in 2015, which of the following statements is or are correct? The agreement was signed by all the member countries of UN and it will go into effect in 2017. कि जो ये UNFCCC की मीटिंग हुई थी इसमें सारे मेंबर कंट्रीज ने इसे साइन किया था और ये जो भी इन्होंने डिसाइड किया दैट विल go into effect in 2017. So this agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees centigrade or even 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels. कि जो अभी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसे कम किया जा सके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, सो दैट कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था ये बेसिकली कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे हम कंट्रोल कर सके. नाउ डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with the climate change. यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, डेवलप्ड कंट्रीज की और डेवलपिंग कंट्रीज की. तो ऐसा हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ग्लोबल वार्मिंग की और उन्होंने $1,000 billion डोनेट करने का सोचा है डेवलपिंग कंट्रीज को हर एक साल 2020 के बाद ताकि वो क्लाइमेट चेंज से डील कर सके. सो इसके बारे में कुछ भी कहें, पैसे देने तो चाहिए उन्हें 2020 के बाद क्योंकि 2020 ने लिटरली काफ़ी लॉस कर दिया है इकोनॉमी का और क्लाइमेट तो अच्छा हो गया है. सो आई डोंट नो दिस शुड वर्क और नॉट. चलिए, काफ़ी मजाक हो गया. आंसर बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कि ये सभी यूएन मेंबर्स ने साइन किया है या ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना चाहता है या $1,000 billion मिलने वाले हैं? So the correct answer is option B, which is only the second option, second statement कि average global average temperature कम करना चाह रहे हैं. कोई हमें पैसे नहीं मिलने वाले $1,000 billion और ना ही इसे सभी यूएन कंट्रीज ने साइन किया था. So Statement 1, it was only agreed by 195 nations in the Paris at the conference. The agreement will enter into force only after 55 countries that account for at least 55% of the global emissions have deposited their instruments of ratification. So, statement 1 is wrong. Statement 3 is developed countries will work to define a clear roadmap on ratcheting up climate finance to $100 billion, not 1,000 billion by 2020. So 3 is wrong. So the only option that can be the answer is option B, which is the correct option. Now moving on to the next question. Consider the following statements. The Mangalyaan launched by ISRO is also called the Mars Orbiter Mission. इसके ऊपर तो पिक्चर आ गई, अब तो सबको पता होना चाहिए. Made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA. Made India the only country to be successful in its making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. So now this is a very popular thing. Now you all have to give the correct answer to this. इनमें से कौन से statements correct हैं? बताइए, सारे या कोई दो, कोई एक? बताइए कौन सा statement correct? Comment down your answers, guys. I have very high expectations इस वाले पे. हाँ, please correct answers दीजिए. So the correct answer is option C, which is the only one and third statement are correct.
India is the only country to be successful in making its spacecraft orbit Mars in its very first attempt, which is आपका statement 3. India is the first Asian country and ISRO is the fourth space agency to send a satellite to Mars. So it is not the second country or after USA, it is the first Asian country. Now moving on to the next question. Regarding Atal Pension Yojana, which of the following statements is or are correct? Atal Pension Yojana की बात की जा रही है. It is a minimum guaranteed pension scheme mainly targeted at unorganized sector workers. Only one member of a family can join the scheme. Same amount of pension is guaranteed for the spouse for life after subscriber's death. तो इन तीनों में से कौन से statements correct है अटल पेंशन योजना के बारे में? What would be the correct answer? So the correct answer is option C again, which is 1 and 3 statement only. So statement 1 is the Yojana mainly addresses the longevity risks among the workers in unorganized sector and encourages them to voluntarily save for their retirement. So option 1, statement 1 is correct. Statement 2 is Atal Pension Yojana is open to all bank account holders who are not members of any statutory social security scheme. सो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही फैमिली मेंबर ज्वाइन कर सकता है, तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका गलत है. स्टेटमेंट 3 है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज दैट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस. After the death of both the subscriber and the spouse, the nominee of the subscriber will be entitled to receive the pension wealth as accumulated till age of 60 years of the subscribe. So clearly 3 is correct. Now same amount जो है यहाँ पे गारंटी किया गया है सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उनके स्पाउस को उनकी मृत्यु तक. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है. Now moving on to our last question. What is the purpose of setting up of small फाइनेंस बैंक्स SFBs का क्या पर्पस है सेट अप करने का? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई enough credit to supply credit to small and marginal farmers, to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural areas. So इन तीनों में से कौन से statements correct है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में? Comment down your answers guys. So the answer is option A, which is only 1 and 2 statements are correct. So the objective of setting up of small finance banks will be to further financial inclusion by the provision of saving vehicles. ये हमारे options में था नहीं. Supply of credit to small business units, which is आपका statement 1. Small and marginal farmers के लिए भी क्रेडिट देना है तो विच इज आपका ऑप्शन 2. उसके बाद माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज था आपका थर्ड एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थ्रू हाई टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट ऑपरेशंस, जो कि हमारा स्टेटमेंट 3 नहीं था. तो आपके स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड के साथ करेक्ट आंसर है ए. नाउ SFBs was recommended by the Nachiket More Committee on Financial Inclusion. Now as this lecture ends, I like to say a few positive words that are: happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the light. Please, अभी जैसा टाइम चल रहा है right now it is very depressing for few people जो अकेले रहते हैं या जो फंस गए हैं, जो घर में ही हैं, और एक्सट्रोवर्ट्स का जिनका बाहर जाकर के बात करना ही लाइफ था उनका तो सब ही खराब हो गया है. तो प्लीज़ आप हैप्पीनेस ढूंढिए, हैप्पीनेस आपके अंदर है. जस्ट ट्राई एंड लुक एट द पॉजिटिव साइड. चाहे आपको छोटी से छोटी पॉजिटिव चीज़ मिले. अभी सब लोग इंटरनेट पे अपनी पॉजिटिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाने में हैं लगे हुए, बट आप किसी की भी प्रोडक्टिविटी से ये मत समझिए कि आप कम प्रोडक्टिव हैं, यार आप कुछ नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन यू. चाहे कितना भी खराब समय हो उसमें कोई ना कोई छोटी सी खुशी की बात ज़रूर होती है. बस आप वो बत्ती जला के देखने की कोशिश करें. टिल देन हैप्पी लर्निंग.